Assalamu alaikum. Welcome to City College. I'm Professor Wajiha Shwaib, and today I'm going to discuss the subject psychology. It's class first year, round 4, and it's test number 5. First of all, let's discuss some of the MCQs. MCQ number 1, the first laboratory of psychology was established by option A, Watson, option B, Titchener, option C, Wilhelm Wundt, option D, Baccari. The correct option is option C, Wilhelm Wundt. MCQ number 2, the first definition of psychology is option A, science of behavior, option B, science of soul, option C, science of mind, option D, science of consciousness. The correct option is option B, that is science of soul. MCQ number 3, research is always based on option A, survey, option B, ideas, option C, test, option D, observation. The correct option is option A, that is survey. MCQ number 4, dash of study is also called clinical method. Option A, experimental method, option B, observational method, option C, case history method, option D, survey method. The correct option is option C, that is case history method. MCQ number 5, the basic unit of nervous system is option A, synaptic, option B, motor nerve, option C, neuron, option D, nerve impulse. The correct option is option C, that is neuron. MCQ number 6, thyroid gland is situated in option A, kidney, option B, brain, option C, throat, option D, chest. The correct option is option C, that is throat. MCQ number 7, middle ear consists of dash bones. Option A, 3. Option B, 4, option C, 5, option D, 6. The correct option is option A, that is 3. MCQ number 8, the most sensitive part of human eye is option A, lens, option B, retina, option C, iris, option D, cornea. The correct option is option D, that is cornea. MCQ number 9, Thorndike did his experiments on option A, monkey, option B, dog, option C, pigeon, option D, cat. The correct option is option number D, that is cat. MCQ number 10, the stage of spontaneous recovery comes option A, before condition, option B, during conditioning, option C, after conditioning, and option D, after end of conditioning. The correct option is D, that is after the end of conditioning. MCQ number 11, the learned motive is of option A, achievement, option B, sleep, option C, fatigue, option D, hunger. The correct option is option A, that is achievement. MCQ number 12, sex motive is included in dash motive. Option A, psychological, option B, social, option C, primary, option D, secondary. The correct option is option number C, that is primary. MCQ number 13, projective test is used for the measurement of option A, personality, option B, attitude, option C, intelligence, option D, disorder. The correct option is option C, that is intelligence. MCQ number 14, an ancient Greek type of personality was presented by option A, Socrates, option B, Plato, option C, Hippocrates, option D, Aristotle. The correct option is option number A, that is Socrates. MCQ number 15, Cannon-Barg theory was about dash. Option A, motive, option B, emotion, option C, attitude, option D, learning. The correct option is option B, that is emotion. MCQ number 16, grammatically basic elements are present in a language. Option A, 4, option B, 2, option C, 5, option D, 3. The correct option is option A, that is 4. MCQ number 17, from this following subtest of WAIS ways is non-verbal. A, arithmetic, B, comprehension, C, digital and symbol, and D, all of these. The correct option is option number D, all of these. Now let's discuss some of the short questions.
Question number 1, write down the importance of semicircular canals. Semicircular canal are 3 tiny fluid-filled tubes in your inner ear that will help you keep your balance. When your head moves around, the liquid inside the semicircular canal sloshes around and moves the tiny hair that line each canal. Question number 2, what do you mean by chunking? It's a term referring to the process of taking individual pieces of information, जिसको हम chunks बोलते हैं, कि एक लंबा सेंटेंस है या एक बहुत लंबा वर्ड है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे, या नंबर है हमारे पास, उसको हम डिवाइड करके याद करेंगे. तो वो जो डिवीजन होती है कि पहले हम 3 याद करेंगे, उसके बाद 3 याद करेंगे, वो चंक्स होते हैं. एंड ग्रुपिंग देम इनटू अ लार्जर यूनिट. By grouping each piece into a large whole, you can improve the amount of information you can remember. Probably the most common example of chunking occurs in phone numbers. As you can see in this, there is no chunking over here. ये एक बहुत लंबी सीरीज है नंबर्स की. If you want to memorize या आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप नंबर याद करना चाहते हैं, तो what you will do is you will डिवाइड लाइक दिस. 1 को आप अलग कर रहे हैं, फिर आप 3 जो डिजिट्स हैं उनको लेकर फिर आपने एंड पे 4 लिया जो कि सिमिलर थे, 1 2 1 2. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय आर्मी बीटा टेस्ट? आर्मी अल्फा इज अ ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टेस्ट developed by Robert Yerkes. But Army Beta test, it was introduced by 1917 due to the demand for a systematic method of evaluating the intellectual and emotional functioning of soldiers. ये ज़बान के इस्तेमाल के बगैर एक अमली गिरोही टेस्ट होता है जो अनपढ़ और फौजियों पर इस्तेमाल किया जाता था जो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे. ये टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के बसरी, नसरी और हरकी आजमाइशों पर मुश्तमिल है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन 3 constitutional factors of language. नंबर 1, जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस, जिसमें हम सेहत कह सकते हैं जिसको. देन कम्स इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आप किस तरीके से अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा रहे हो, डेवलपमेंट आपके दिमाग की हो रही है, आपको रीजन समझ आना शुरू हो गई हैं. एंड नंबर 3, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. Question number 5, define interview. An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions and the other provides answers. In common parlance, the word interview refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. ठीक है, इंटरव्यू जब भी होता है तो ये एक लफ्जी मतलब ख्यालात आपके सामने आते हैं, नुक्ता नज़र का तबादला करना कहा जाता है, या इंटरव्यू के ज़रिए लोगों के ख़यालात से आगाही हासिल होती है. इसकी वजह से लोग आपस में मुख्तलिफ मौजू पर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर Now comes question number 6, differentiate emotion and feelings. Feelings are mental experiences of body states which arise as the brain interprets emotions themselves like physical states arising from the body's responses to external stimuli. कि कोई भी आपका फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो आपकी फीलिंग्स हैं. कोई भी आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिला है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला है, उसकी वजह से जो आप फील करोगे दैट इज द फीलिंग. व्हाइल इंडिविजुअल इमोशंस आर टेम्परेरी, the feelings they evoke may persist and grow over a long period of time. Emotions आपके ख़त्म हो जाते हैं लेकिन feeling जो है वो उसके साथ attach ज़रूर रहती है और वो लाइफ टाइम भी चलती है. Question number 7, what is meant by higher cognitive process? Higher order cognition is composed of a range of sophisticated thinking skills. Among the functions subsumed under this category of neurodevelopment functions are concept like acquisition, systematic decision making, evaluative thinking, brainstorming, which includes creativity and rule usage. आपको किसी भी तरीके से जो फ़र्द को एक माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में मदद करता है वो आपकी हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है.
अगर आप एक माहौल से दूसरे माहौल में जाते हैं, आपको समझने में काफ़ी टाइम लगता है और कुछ लोग बहुत जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द हायर कॉग्निटिव एबिलिटी. आपके आला जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, ये जो अमाल है, ये आपके हायर कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाए जाते हैं. Question number 8, that is define perception. Perception, as you know, it's the process of getting, interpreting, selecting, and it organizes the sensory information. It includes the collection of data from sense organs through to the interpretation made by the brain. As you can see, अब एक इंसान इसी एक नंबर को जो है, यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान 6 बोलेगा और यहाँ वाला 9 बोलेगा, तो ये एक परसेप्शन है. आप जिस तरीके से जिस चीज़ को जो नाम देंगे वो परसेप्शन कहलाई जाती है. Explain kinds of variables. The first variable type is called the independent variable. This variable is the one that is manipulated or changed by the scientist. जिसको जो select करता है सिर्फ वही बदल सकता है, उसको हम independent कहते हैं. The second type of variable is one that is observed or measured in experiment, and it is known as dependent variable. तो अगर तो आप कोई भी चेंज इंडिपेंडेंट में कर देते हैं तो उसकी वजह से चेंज डिपेंडेंट में जरूर आएगा, ठीक है. लेकिन इस डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी अगर चेंज आता है आपके एक्सपेरिमेंट में तो इसका असर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा. Question number 10, define IQ. IQ is a type of standard score that indicates for how far above or how far below his or her peer group an individual stands in mental ability. At that time, IQ was presented as a ratio of mental age to chronological age multiplied by 100. So, if an individual of 10 years of age has a mental age of 10, so the IQ will be 100. तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसके ज़रिए हम जहानत मालूम करते हैं कि कितना टेक्निकली अगला बंदा सोच सकता है या उसका IQ लेवल क्या है. I hope that you understand all the points. Thank you very much for watching the video.